Hi guys, welcome back to my channel. I am Parul Sharma. Welcome to my channel. In today's video, I'm going to share with you how I created this blue and green fusion look और ये बहुत ही dramatic look है और बहुत ही suitable है, not very chunky makeup look. It's suitable nude type makeup look. So let's get started. But before starting the video, I want to say that if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe to my channel guys. It means a lot to me. Thank you. So let's get started. तो सबसे पहले अपनी आईज को कंसील कर लेंगे। देन इसको ब्लेंड कर लूँगी एक स्पॉन्ज की हेल्प से। देन मैं इसको सेट कर लूँगी पाउडर की हेल्प से। हियर आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड का ये कॉन्टूर पैलेट। इसमें आपको दो शेड्स मिलते हैं, एक ब्रॉन्जर एंड एक बनाना पाउडर। देन मैं अपने आउटर आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ ये डार्क ब्लू शेड एंड इसको मैं अपनी क्रीज पे अप्लाई कर लूँगी। सेम पैलेट में से मैं यूज़ कर रही हूँ ये लाइट ब्लू काइंड ऑफ शेड एंड इसको मैं उसी के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। This dark blue shade from this palette is chalky. It's not very pigmented. It's okay. सेम पैलेट में से मैं ये पैरेट ग्रीन कलर अप्लाई करूँगी उसी के ऊपर और ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी अपनी क्रीज पे। है आई एम डूइंग कट क्रीजिंग, सो मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर अपने आईलिड पे। आई एम डूइंग कट क्रीजिंग बिकॉज मैं चाहती थी जो मैं ग्रीन कलर इस पे अप्लाई करूँगी वो बहुत अच्छे से दिखे। आईज के कॉर्नर पे ये डार्क ब्लू शेड फिर से अप्लाई कर रही हूँ for giving this fusion look. As you can see, this dark blue shade is not much pigmented, it's chalky. Here I am applying that parrot green color on my eyelids and इसे मैं अच्छे से पूरे eyelid पे अप्लाई कर लूँगी ब्रश की हेल्प से। So here I will apply the blue eyeliner. मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का शक्ति आईलाइनर। आई थिंक ये मैंने पर्पल से बाय किया था। Will hydrate my face with L'Oreal Paris का Revitalift Crystal Micro Essence। So then I am using this Pond's का moisturizing gel. This is the best moisturizer for the summers. जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है उनको यही मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई करना चाहिए। अगर वो अफोर्डेबल रेंज में बाय करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो फॉर इट। देन मैं जल्दी से अप्लाई कर रही हूँ अपना सनस्क्रीन, मेरा फेवरेट न्यूट्रोजेना का सनस्क्रीन बिकॉज ऑफ स्किन प्रोटेक्शन इन समर्स। आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर। इस प्राइमर को अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन पे एक बहुत ही अच्छा शीन ग्लो अप दिखाई देगा।
So then the must color correction. It is very must for those who have dark circles, pigmentation, redness, or any mark on your skin. And I will blend it with sponge. सो गाइस इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना मेकअप रेवोल्यूशन का ये कंसीलर टू कंसील माई आईज एंड टू डू हाईलाइट माई फेस. Guys, my neck area got infected with heat waves this summers. So देख सकते हैं इस कंसीलर ने उसको भी कितने अच्छे से हाइड कर दिया. Time to apply a foundation. So here I am using Lakme का Mousse foundation. Guys, believe me, this is the best foundation for summers. ये इतना लाइट वेट फाउंडेशन है कि आप इसे अपने हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप स्पॉन्ज से ना भी करें तो आपके हाथ से आराम से ब्लेंड हो जाएगा. दिस इज़ अ वेरी गुड फाउंडेशन फॉर समर्स. दिस doesn't look heavy on your face, and this is the light to medium coverage foundation. Using same Wet n Wild का compact to set my face with giving it matte look. Then I'll do a very light contouring on my face using this bronzer. So this time I'm doing a contour on my cheeks, my nose, on my forehead and area of my chin. So I'll apply a blusher. This is Makeup Revolution का ब्लश पैलेट. इसमें से मैं ये शेड लेके अपने चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी. And it is very pigmented and you will got so many colors in one palette. I'm doing highlighting. So ये highlighter मैंने अपने लोकल मार्केट से ख़रीदा था. फैशन कलर हाइलाइटर. इट्स वेरी अफोर्डेबल. ये मुझे अंडर 200 रुपीज़ में मिल गया था. आई विल हाइड्रेट माई लिप्स. सो हियर आई एम यूजिंग माई फेवरेट बाइट का लिप बाम. It's time to apply my favorite lipstick. This is my favorite lipstick from Purple and this is a very good nude shade as you can see. So अब मैं अपने आई के डाउन आईलिड पे अप्लाई करूँगी ये डार्क ब्लू शेड to give a little smoky look and blend it with brush. And from the same palette this green shade. यहाँ पे मैं अपनी ब्रोज को सेट कर रही हूँ. सो हेयर आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का अल्टीमेट ब्रो किट. अब मैं अप्लाई कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये वाइट पेंसिल ऑन माई आईज.
मस्कारा की हेल्प से मैं अपनी लैशेस को सेट कर लूँगी एंड देन आई विल अप्लाई फेक लैशेस विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लू। ये ग्लू डुओ का है एंड ये भी मैंने लोकल मार्केट से बाय किया है गाइस। अंडर 80 और 70-80 रुपीज़ के अंडर आपको ये ग्लू मिल जाता है। दिस इज़ द बेस्ट ग्लू फॉर लैशेस एंड मैं वेट करूँगी इसके सूखने का। So I'm here highlighting under my brows with that fashion color highlighter. Apply mascara on my fake lashes as well to give a natural look. Here I'm highlighting my eyes corner. My makeup is done and it's time to set the makeup with this Wet n Wild makeup setting spray. अब आपने देख लिया कि मैंने कैसे ये लुक क्रिएट किया है, और अगर आपको ऐसे और भी लुक्स देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ एंड सी यू अगेन, बाय। Thanks for watching guys. Please don't forget to subscribe to my channel.